हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मयंक लॉहॉलिक पे हम MCQs ऑन केस लॉस रिलेटेड वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव है अबाउट द कंपेंडियम ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड MCQs जो केस लॉस पे बेस्ड है। एंड ये सारे ही लॉ सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट स्पेसिफिक और चैप्टर स्पेसिफिक वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो सीरीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ये हमारा सबसे पहला वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा एंड हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, Constitution is the mechanism under which the laws are to be made and not merely an act which declares what the law is to be, has been laid down by Supreme Court in options are option A, India Cement Limited versus State of Tamil Nadu, option B, State of Karnataka versus Union of India, option C, SP Gupta versus President of India, option D, in re अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको आंसर पता हो तो ज़रूर अभी कमेंट करके बताइए। वैसे हम आंसर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट decision in SR Bommai versus Union of India, the Constitution of India is option A federal, option B quasi-federal, option C cooperative union and option D none of the above. इस क्वेश्चन में यूजुअली हम फेडरल और क्वासी फेडरल में कंफ्यूज होते हैं, पर द आंसर इज फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, in which one of the following cases Supreme Court had held that states do not enjoy sovereignty under the Indian Constitution as it does not provide for a federal character in the strict sense. So the options are option A, in re Beruberi Union, in option B, State of West Bengal versus Union of India, option C, State of Bombay versus RMD Chamar Baugwala, option D, Sankri Prasad versus Union of India. So the answer is option B, State of West Bengal versus Union of India. Next question, question number 4. The Supreme Court of India described the Indian Constitution as not truly federal in which one of the following cases? So the options are option A, State of Bihar versus Shailbala Devi, option B, the State of West Bengal versus Union of India, option C, Kameshwar Singh versus State of Bihar, and option D, O.K. Ghosh versus E.X. Joseph. And इसमें the option है option B, the State of West Bengal versus Union of India. Coming to the next question, legal sovereignty in India resides in the Constitution itself and not in we the people of India. This ideology was expressed in option D, Keshwananda Bharati's case. वैसे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस A.K. गुप्ता केस, ऑप्शन बी, शंकरी प्रसाद केस, ऑप्शन सी, गोलकनाथ केस, और डी, केशवानंद भारती केस। ये तो बहुत ही लीडिंग केस है एंड इसका तो आंसर सबको पता होता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला केस लॉ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Democracy and federalism are essential features of our constitution and basic feature of its structure. This observation was made in SR Bommai versus Union of India by the judge. So the justice का नाम भी हमें कई बार याद रखने पड़ते हैं ऐसे लीडिंग केसेस के, कई बार वही एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इस केस का आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस PB सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following cases the Supreme Court held that the federalism in India is not a matter of administrative convenience but one of a principle
तो दिस वॉज हेल्ड इन द केस, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा, ऑप्शन सी मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वेस्ट बंगाल 2010. So the answer is option A, S.R. Bommai versus Union of India. Coming to the next question, question number 8. In Union of India versus Sukumar Sen Gupta, AIR 1990, Supreme Court 1962, the Supreme Court stated that agreements of 1974 and 1982 between India and Bangladesh concerning Teen Bigha. This was the options are required, and option A required an enabling act of Parliament for their implementation. Option B did not require a legislative action. Option C required constitutional amendment for their implementation, and option D could not be implemented as it amounted to secession of Indian territory in favor of Bangladesh. So the option is required constitutional amendment for their implementation. तो ये थे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्रियम्बल टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आंसर इज इन रे बेरुबरी केस, एंड अदर ऑप्शंस आर केशवानंद भारती केस, मनिका गांधी केस, एंड एस आर बोमाई केस। ये वाली केस लॉस प्रियम्बल की हर लॉ स्टूडेंट को ही पता होना चाहिए कि कौन से केस में प्रियम्बल को एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था और क्यों, एंड किस केस में कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल को एज अ पार्ट नहीं बताया गया था। सो यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका आंसर भी आई गेस सबको ही पता होगा। Options are option A Golaknath case, option B Berubari case, option C Keshwananda Bharati case, and option D all of the above cases. But no, the answer is Keshwananda Bharati case, और इसी केस में मिनर्वा मिल्स केस की भी साइटेशन दी गई थी, एंड ये आप देख सकते हैं कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछ चुके हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. It has been observed by the Supreme Court of India that the word socialist in the preamble enables the court to lean more and more in favor of nationalization and state ownership of industry. This was held in, the options are Keshwananda Bharati versus State of Kerala, option B Excelware versus Union of India, option C ABSK Sangh versus Union of India, and option D Minerva Mills Limited versus Union of India. So the answer is option B Excelware versus Union of India. Question number 4. In Re Bedubari and exchange of enclaves, the Supreme Court held that the option A rule of law is not a part of constitution, option B rule of law is a part of constitution, and option C preamble is not a part of constitution, and option D preamble is a part of constitution. So इसका आंसर है preamble is not a part of constitution. तो ये हेल्ड किया गया था हमारा केस लॉ बेरुबरी इन रे बेरुबरी केस में कि preamble is not a part of constitution. Coming to the next question. In the case of Golaknath versus State of Punjab, it was remarked that our preamble contains in a nutshell its ideals and inspirations. So, who was the judge who said this? Option is C, Justice Subba Rao. Question number 6. Preamble of our constitution is of extreme importance, and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. सो ये बताया गया था जस्टिस सीकरी की ये स्टेटमेंट थी, एक्सप्रेस्ड अबाउ ओपिनियन इन द केस ऑफ। तो ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किस केस में इस स्टेटमेंट को कोट किया गया था। तो ऑप्शन है बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आप याद रखिए ये था जस्टिस सीकरी की स्टेटमेंट।
So the next question, in Golaknath versus State of Punjab, Justice K. Subba Rao observed, so the option is A, the preamble contains in a nutshell ideals and aspirations of constitution. Same question को यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है. Question number 8, interpretative value of preamble was discussed in. So the options are In Re Beruberi Union, option B Union of India versus Azadi Bachao Andolan, option C State of Gujarat versus Shanti Lal Mangaldas, option D none of the above. So the answer is option A, In Re Beruberi Union. Coming to the ninth question, it was held by the Supreme Court that preamble was not a part of constitution in the case of dash and this has been overruled in the case of dash. ये ऑलरेडी हम ऊपर दूसरे केसेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होगा इसका आंसर. द आंसर इज ए. इन रे बेरुबारी यूनियन में it was held that the constitution was not, the preamble was not a part of constitution and इसी को overrule किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. It is well accepted by thinkers, philosophers and academicians that if justice, liberty, equality and fraternity, including social, economic and political justice, the golden goals set out in the preamble to the constitution are to be achieved, the Indian polity has to be educated and educated with excellence. So this was said in the case of A. P.A. Inamdar versus State of Maharashtra. Coming to the next question, question number 11. In Tinsukia Electricity Company versus State of Assam, the Supreme Court pointed out that the term socialist used in the preamble to the Constitution of India means a state whose basic policy is to, options A, prohibit concentration of wealth, B, distribute equitably the natural resources, C, prohibit concentration of wealth and uplift the living standards of people, option D, prohibit concentration of wealth and distribute equitably the natural resources. So इसमें ऑप्शन है ऑप्शन डी, prohibit concentration of wealth and distribute equitably the natural resources. तो ये होता है a state whose basic policy. Option D, question number 12. In which of the following cases Justice Hidayatullah held that the preamble is very soul of the constitution, eternal and unalterable? So options are option A, S.R. Bommai case, option B, Golaknath case, option C, केशवानंद भारती केस एंड ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स केस. तो इसका ऑप्शन है गोलकनाथ केस, इसमें जस्टिस हिदायतुल्लाह ने हेल्ड किया था कि प्रियम्बल इज़ द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रियम्बल का टॉपिक एंड हम देख रहे हैं सिटीजनशिप के टॉपिक से. ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है तो इसीलिए हमने इसको एक सिंगल वीडियो में मर्ज कर दिया है. सो सिटीजनशिप, द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज एसोसिएटेड विद the issue of domicile in the state concerned for getting elected to the Council of States? So the options are option A, Rameshwar Prasad versus Union of India, option B, Kuldeep Nair versus Union of India, option C, S.R. Bommai versus Union of India, option D, Satwant Singh versus Assistant Passport Officer. So the option is B, Kuldeep Nair versus Union of India. Next question, in which of the following case Supreme Court held that in domicile of choice, mere acquisition of other domicile is not sufficient? There must be clear intention to abandon the domicile of origin. So the options are option A, Sundar Gopal versus Sundar Rajini, option B, Bhanwaru Khan versus Union of India, option C, Tata Engineering versus State of Bihar, and option D, R.C. Cooper versus Union of India.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी. Coming to the next question. Article 5 recognizes the domicile of India and it does not recognize the concept of state domicile. In which case Supreme Court observed this? So Supreme Court observed this in the case Pradeep Jain versus Union of India. एक leading case है and एक बहुत ही important case law है. Basic structure of constitution के हम अब क्वेश्चंस देखते हैं. So the first question, in which case it was held by the Supreme Court that preamble is the basic structure of constitution. So इस क्वेश्चन को हम डील कर चुके ऑलरेडी. इन रे केशवानंद भारती केस. इन रे का मतलब होता है in reference to. The second question, which of the following cases upheld secularism as a basic feature of Indian constitution even before the word secular was inserted in the preamble? So the options here are option A, Indira Gandhi versus Rajnarayan, option B, Keshwananda Bharati versus State of Kerala, option C, Vaman Rao versus Union of India, and option D, Samata versus State of AP, Andhra Pradesh, sorry. So the correct answer is option B, Keshwananda Bharati versus State of Kerala. Next question. In which of the following cases did Supreme Court hold that the preamble to the Constitution is a part of its basic structure? ये भी हम केस देख चुके हैं. So the answer is S.R. Bommai versus Union of India. Next is, in which case the Supreme Court held that objectives in the preamble of the Constitution is its basic structure and it cannot be amended under its Article 368. Option is answer C, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, एग्ज़ाम में भी रिपीट होते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को आप फिंगर टिप्स पे रखना ज़रूरी होता है इन क्वेश्चंस को, और इन केस लॉस को भी, बिकॉज ये है लीडिंग केस लॉस. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस द सुप्रीम कोर्ट वाइडेंड द एम्बिट ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंक्लूडिंग which within the purview, option A, rule of law, option B, judicial review, option C, democracy as implied by free and fair elections, and option D, all of the above. So इसका आंसर है option D, all of the above. Sixth question. Prior to the 42nd Amendment of the Constitution, in which of the following cases Supreme Court had observed that secularism is a basic feature of the Constitution? So secularism is a basic feature of Constitution. The options are State of West Bengal versus Union of India, option 2, Indira Nehru Gandhi versus Rajnarayan, option 3, M.H. Qureshi versus State of Bihar, option 4, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. तो हमें जब पता है कि 42nd अमेंडमेंट से सेक्युलर वर्ड इंसर्ट किया गया था, तो इससे पहले सेक्युलरिज्म को किस केस में हमने देखा था, तो ये आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3, that is Indira Nehru Gandhi versus Rajnarayan and M.H. Qureshi versus State of Bihar. Question number 7. The basic structure doctrine with respect to the Constitution of India. So options. Option A was propounded first in the judgment of the Supreme Court in Keshwananda Bharati versus State of Kerala. Option B is contained in Constitution itself. Option C was propounded first in the judgment of Supreme Court in A.K. Gopalan versus Government of India. Option D was propounded first in the Privy Purse case. So इसका आंसर है option A, was propounded. Basic structure doctrine with respect to Constitution of India was propounded first in the judgment of the Supreme Court in Keshwananda Bharati versus State of Kerala. Question number 8. Doctrine of basic structure was laid down in options Keshwananda Bharati case, option A, option B, गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी मनेका गांधी केस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इसका आंसर पता है कि ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस है. ये बार बार पूछा जाएगा आपसे, सो याद रखिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. In which case the Supreme Court held that secularism is part of the basic structure of the Constitution of India.
Again, repeated question. So the answer is SR Bomai's case. Though. So the next question, or question number 10, in PUCL versus Union of India 2013, the Supreme Court held the following. Options are option A, free and fair election is a basic structure of the constitution. Option B, right to vote is a fundamental right. Option C, provisions of nota in the EVMs will accelerate the effective participation in the present state of democratic system. And option D, both A and C. So इस क्वेश्चन का आंसर है both A and C. That is, free and fair election is a basic structure of the constitution, or provision for nota in the EVMs will accelerate the effective participation in the present state of democratic system. Next question, question number 11. In which case secularism was recognized as basic feature of the Constitution of India? ये अभी हमने देखा था. Option C, SR Bomai versus Union of India. Question number 12. In which of the following judgments was it held that the jurisdiction conferred upon the High Courts under Article 226 and upon the Supreme Court under Article 32 of the Constitution is part of the inviolable basic structure of the basic structure of the Constitution of India? So the options are option A, Common Cause versus Union of India. Option B, L. Chandrakumar versus Union of India. Option C, In Re Special Courts Bill. And option D, SR Bomai versus Union of India. So the correct answer is L. Chandrakumar versus Union of India. Question number 13. In which one of the following cases has the Supreme Court observed that judicial review is a basic structure of the Constitution? Option A, SR Bomai versus Union of India. Option B, SP Mittal versus Union of India. Option C, Maneka Gandhi versus Union of India. And option D, L. Chandrakumar versus Union of India. आंसर है ऑप्शन डी, एल चंद्रकुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Question number 14. Holding of periodic free and fair elections by the Election Commission is part of the basic structure of the Constitution as per the following. तो ये कौन सा केस था हमको बताना है. ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस AIADMK. ऑप्शन बी, SS धनोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी, इन गुजरात असेंबली इलेक्शन मैटर. ऑप्शन डी, Sadiq Ali versus Election Commission of India. So the answer is in Gujarat Assembly election matter. Next question, question number 15. In which of the following cases free and fair election is recognized as basic structure of Indian Constitution? तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस. Question number 16. In which case the Supreme Court laid down that the Parliament has the sovereign power to amend the Constitution, but it has no power to demolish the basic structure of Constitution. Options are none of these. First option है. And option B, Maneka Gandhi versus Union of India. Option C, Golaknath versus State of Punjab. Option D, Keshwananda Bharti versus State of Kerala. इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. Next question. In which of the following cases it was decided that the powers of High Court under Article 226 and 227 are the basic structure of the Constitution? तो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, इंदिरा नेहरू गांधी केस. ऑप्शन बी, केशवानंद भारती केस. ऑप्शन सी, नागराज केस. एंड ऑप्शन डी, एल चंद्र कुमार केस. ऑप्शन है एल चंद्र कुमार केस. ऑलरेडी प्रीवियसली हम देख चुके हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 18. डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर एसेंशियल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक फीचर ऑफ इट्स स्ट्रक्चर. दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड इन SR Bomai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बाय ऑप्शन ए, जस्टिस PB सावंत. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी हम कई सारे क्वेश्चंस में देख चुके हैं, रिपीट होते रहते हैं, जस्टिस के नाम पूछे जाते हैं.
तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी होता है। चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।